Hello, good morning to all my dear summer students. Welcome to Zoology online class. In the previous class, I had taught you about the habitat and the habits. And that was the repetition for the old student, but new for the newcomers. But today, which I will start now, it is new for all. It is new for all. Clear? So, try to understand me and listen carefully. Clear? And let me discuss or let me describe something that is the previous thing which I have taught you. Clear? And under the habitats, I have told you the animals have been divided into two groups. One is aquatic, another is terrestrial. Then the aquatic is again divided into marine, freshwater and brackish water. Clear? Then under the marine or under the aquatic habitats, some are the plankton. The planktons are micro, that is the small organisms having no locomotive organelles. They float on the surface of the water and flows or move in the direction of the water current. Clear? And if they are the animal, they are called as the zooplankton. If they are the plant, they are called as the phytoplankton. Then, and some planktons which are not caught by the plankton net, they are called as the nanoplankton. The nanoplankton. I am not writing again the same thing which I have written in the previous classes. Clear? Then the Nicton. Nicton are the organisms having the locomotive powers. They can move in the direction of the wave or against the direction of the wave. That means they have their own locomotive power. They can move by their own will. Clear? Then another things, that is the marine animals are divided into the pelagic animals which are living in the surface water, then the benthic animals which are remaining in the bottom of the sea, and some are the littoral which are present or which are remaining near the seashore area, samudra upakula pakhare. And some are, that is littoral animals, that is the littoral animals, that is the seashore area. Then that is neretic animals, that is shallow water, that is within the 200 meters of depth. Then the freshwater have been divided into two groups. One is, that is the lentic means that is the living in standing water, and a lotic means those are living in the, that is running water. Clear? Then in the terrestrial animal, then this is in brief, that is about the aquatic animals. That is, under the aquatic animal there are so many books, but it is very, that is in a short but in a brief it is, that is I described it. Clear? Then in a littoral, that is the terrestrial animals. Terrestrial animals are animals which are living in the land. They are cursorial, that is the fast, they are adapted for fast running. Then the fossorial, they are living under the soil on the holes, that is rabbit and your rat, etc. Earthworm, arboreal, that is they are living in the trees, monkeys, birds, bats, etc. Then another is, that is the
Scansorial. Scansorials means those are, that is, have the ability to, that is the move in perpendicular walls like house lizard, etc. Then the aerial. Those animals are leading most of the times in air, that is the insect and birds. Clear? That is wing insects and birds, etc. Then habit. Habit means that is the natural behavior of the individuals. The natural, under the, that is the habit. I have told you the habit is of different types. One is the living habit, another is the feeding habit, another is the breeding habit. In the first step I have, that is completed, that is the living habit. Clear? That is the habit means, habit refers to the normal behavior of the individuals. Clear? The habit, that is the, under the living habit I have described, that is the solitary habit animals, colonial animals. Solitary means those are living alone, and that is the colonial animals, those are living in groups, and the gregarious animals living in a group but not helping to one another. Then free-living animals, they are self, that is the dependent, they are not depending upon other animals. Parasitic animals means those are living on the cost of other animals for their shelter, food, and that is the protection, etc. And the sedentary or the sessile animals are the animals, those are attaching, the leading maximum time by attaching themselves into the substratum. Clear? I am not telling the area because I have told you in the previous class, that is very, that is the descriptively, that I am, that is only remembering you in the term of English only, that is for your recollect of your mind. Clear? Then the feeding habit, under the feeding habit, that is the coprophagus, that is those are eating their own fecal matter or own stool, rabbits. Then that is the sanguivorous, that is the feeding on their, on the blood, that is the mosquito and the bedbug, a leech, etc. Then that is the saprophagus, that is the feeding on the rotten substances, organic substances. Cannibals or cannibalism, that is those are, that is those eat their own, that is the species. Then herbivorous, animals who depend upon or who, that is, are vegetarian, that is who are, that is who are vegetarians, that is they purely depends upon the plant and the plant materials. Then the carnivorous, that is flesh eating animals, lion, tiger. Omnivorous, the omnivorous, that is the they are the both vegetarian and non-vegetarian, that is non-veg, veg and non-veg, that is your man, cat, dog, etc. Then the planktivorous, those are, that is feeding on the plant, that is plankton, that is called as the whale, that is called as the whale, and that is the levio, that is the young one of a levio, that is the rui macho. Then piscivorous, that is those feeds on, that is the small fishes. Then detrivorous, that is dead animal materials, that is vulture, fungi, etc. That is larvivorous, that is those are feeding on the larvae of other animals. Frugivorous, that is the fruit eating animals, that is your birds, bat, etc. Insectivorous, some birds. Insectivorous, those are, that is eating only the insect, frog, and your house lizard, garden lizard, etc. Granivorous, that is granivorous are the individuals who, that is eat only the grains, that is your sheep, that is your pigeon. Then folivorous means that is the leaf eating, that is goat and the sheep. Then let me start the new things which I will describe, that is very, that is minutely. Clear? That is, you come to the first breeding habitat. Breeding means that is the reproductive behavior, that is breeding is the reproductive behavior of the individuals, are in biologically they are called as the breeding habits. Clear? And under the breeding habit, that is called as the breeding habit.
breeding habits. Under the breeding habits, you first come to, that is the, you try to understand me, that is first you come to the monoecious. What is monoecious? Monoecious or hermaphrodite, or you can say they are called as the bisexual. That is the meaning is the same. ये समस्तंकर माने होची समान, either monoecious or hermaphrodite or bisexual. Bi means two, sex means that is either the male and the female. तामाने ए इंडिविजुअल गुड़ाको इमिति इंडिविजुअल बा इमिति ऑर्गेनिज्म जा ध्यरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अच्छी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अच्छी. ब्रीडिंग हैबिटेट कौन रिप्रोडक्टिव हैबिटेट तामाने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन धरो टेस्टिस that is and female reproductive organ the ovary, both are present in one individual. The male reproductive organs are the, in men it is called as the primary, that is reproductive organ, that is called as the testis, and in the female the primary reproductive organ is the ovary. ये दीटा होची man primary कहीं की कुआ गला ना, ये दीटा होची man, ये दीटा को छाड़िले reproduction है परिवो नहीं, कारण testis तैयारी करिवो sperm बा शुक्राणु and ovum, ovary तैयारी करिवो ovum डिंबाणु हला. तो ये दीटा होची main organ of the reproduction. तेनु ये दीटा organ थिबो कोउटी ना गुटे इंडिविजुअल भितरे, तेनु ताकुई कुआ गला bisexual or that is monoecious. Mono means single, cious means house. गुटे हाउस भितरे सबू अच्छी, that is monoecious. Clear? एगुड़ाक किए आर्थवर्म जिया, आउ किए फेसियोला. फेसियोला एमती चित्र अच्छी तार फेसियोलार, एटा गोटे पारासाइट. लिवर फ्लूक एटा, एटा लिवर फ्लूक, एटा गोटे फेसियोला, एटा फ्लैटवर्म. जो क्लासिफिकेशन पढ़ा आम डिटेल पढ़ा, दैट इज द फेसियोला. आर्थवर्म जिया, आउ टेनिया टेपवर्म, फीताकुर्मी हाई स्कूल पढ़ी, दैट इज द टेपवर्म. टेप वर्म लंबा लंबा है, ये लंबा लंबा एमती मुंड गोटे थी, एमती एमती नेक, आउ नेक पाखु एटा गोटे मीटर पाखापाखि थाए है, यहाँ हूँ फीताकुर्मी. This is called as the tenia and this is called as the fasciola. And earthworm जिया तो तुम समस्त देखिचो. So these are the monoecious or they are hermaphrodite or they are called as the bisexual. Means one individual bears both the male and female reproductive organs. Clear? One individual bears who bears that is both male and female reproductive organ within its body is called as the bisexual. हला तमाने ता बॉडी भितरे दी प्रकार रा ऑर्गन अछि, मेल भी अछि फीमेल भी अछि. हला से आउ बाजा बजेबो नाही कि बा हेते आउ केटी जीवो नाही, दैट इज सी तमाने से तार निजे सफिशिएंट. हला गला तापरे ए जदि बाइसेक्सुअल हुए ता भितरे किछि अछंती कोन ना प्रोटोएंड्रस, आउ किछि अछंती दैट इज प्रोटोगाइनस. एटा बाइसेक्सुअल हला तामाने गुटे इंडिविजुअल भितरे दी प्रकार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अछि. एटा पुणी दी प्रकार रे कोन कोन ना, गुटे होछि प्रोटो. प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्रोटोएंड्रस. प्रोटोएंड्रस किछि अछंती प्रोटोएंड्रस, आउ किछि अछंती प्रोटोगाइनस. देम दी प्रकार रे आउ किछि अछंती प्रोटोगाइनस. तमे जतले तमे तो फर्स्ट ईयर आरंभ है नहीं. एंड्रस मीन्स एटा होछि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फ्लावर देखिथिबो, ए फ्लावर रो ए जो फ्लावर अछि, जो फूल अछि, ए फूल रो एटा होछि थालास. हला ए थालास ऊपरे एमती गुटे एटा होछि गाइनेसियम, एटा होछि फीमेल गाइनोइसियम. हला एटा होछि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अच्छा आउ एमती मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एमती थिबो, धुतरा फूल देखिबो दैट इज बा मंदार फूल देखिबो, एमती सब अछि दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एगुडा कहंती एंड्रोसियम. एंड्रोइसिओयम हला इसियम, दैट इज एडी ओ हबो. हला
दैट इज गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम सेउटू आसी दीटा वार्ड है एटा हूँ प्रोटो एंड्रस प्रोटो मीन्स फास्ट एंड्रस मीन्स एंड्रोसियम ताने जदिओ ये इंडिविजुआलटा कौन ना बाइसेक्सुआल मेल आउ फीमेल दीटा जाक सेक्स अर्गान ता भितर अच्छी किंतु एटा हूँ प्रोटो एंड्रस प्रोटो मीन्स फास्ट एंड्रस मीन्स एंड्रोसियम एटी कौन हम ना एंड्रोसियमटा प्रथमे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव अर्गानटा प्रथमे मैच्योर्ड हम ये फीमेलटा हो पार ना आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैच्योर्ड मैच्योर्ड मीन्स है जोटा जिते गोटे इंडिविजुआल ability पाए to produce the reproductive cell or that is the individual becomes that is able to for the reproduction से reproduction पाई सक्षम हुए सेतबेले ताकू कहा जाए that is the matured one हला देडी तेणु से स्पर्म तैयारी करि पारिबो आउ ओभम भी तैयारी करि पारिबो फीमेल हेले ओभम तैयारी करिबो मेल हेले स्पर्म तैयारी करिबो तेणु एटी जेतले एंड्रोसियम हला एटी मेल गोटे इंडिविजुअल दीटा अच्छी किंतु एटी मेलटा रिप्रोडक्शन आगे मैच्योर्ड हो फीमेलटा परे मैच्योर्ड हम फीमेलटा परे मैच्योर्ड हेले कौन हम ना एटी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम ये जेतले मैच्योर्ड होउची से स्पेसीस रो से समय रे जहार फीमेल मैच्योर्ड हेतिबो ता सहित तार कपुलेशन हम है तेणु सहीटा को कहते क्रॉस कपुल दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर पढ़ा आम है तेणु यहाँ है प्रोटो एंड्रस जहार मेलटा प्रथमे मैच्योर्ड हम दे आर कॉल्ड एज द प्रोटो एंड्रस एग्जांपल किए ना आर्थवार्म एग्जांपल होची आर्थवार्म जदिओ आर्थवार्म गोटे इंडिविजुआल तो सी तारी भितर रिप्रोडक्शन कर दियंता ना से हो पारबनी से आउ गोटे इंडिविजुआल सहायता नुए बा कपुलेशन करे फॉर द रिप्रोडक्शन यार जिते मेल मैच्योर्ड होता है अन्य जनकर फीमेल से मैच्योर्ड हो से अनुसार से क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुए सेमती प्रोटोगाइनस प्रोटो मीन्स फास्ट गाइनोसियम मीन्स गाइनेसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव अर्गान जहाँ फीमेलटा आगे दैट इज द कौन हम ना मैच्योर्ड हो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोगाइनस बुझीगला एंड प्रोटोगाइनस इज योर हार्डमानिया हार्डमानिया गोटे अच्छी समुद्र रे रुहे बाइसेक्सुआल एमती तार स्ट्रक्चर एटा हूँ नॉन कोडेट ग्रुप रे एटा हूँ नॉन कोडेट ग्रुप रे ए स्ट्रक्चर तार दैट इज हार्डमानिया क्लियर सो यहाँ हूँ तार स्ट्रक्चर यहाँ एमती सेक लाइक स्ट्रक्चर है एमती यहाँ हूँ प्रोटोगाइनस तेणु यहाँ है प्रोटो एंड्रस प्रोटोगाइनस बुझीगला तो प्रथम है हार्माफ्रोडाइट बा बाइसेक्सुआल बा दैट इज कॉल्ड एज द मोनोसियस तामाने वन इंडिविजुअल बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लियर जदि मेलटा मैच्योर्ड हम आगे ताकू कहगला प्रोटो एंड्रस फीमेलटा परे हम जदि फीमेल रिप्रोडक्टिव अर्गानटा आगे मैच्योर्ड है आगे से ओभम दब स्पर्मटा डेरी दब बहुत दिन पर दब देन दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोगाइनस क्लियर एटा है आर्थवार्म आउ एटा है दैट इज हार्डमानिया क्लियर देन यू कम टू द डायोसियस एटा चलीगला मोनोसियस देन यू कम टू द डायोसियस that is the second one is called as the dioecious dioecious animal it is simply hermaphrodite or monoecious it is simply dioecious by unisexual हला एटी होता बाइसेक्सुअल वन इंडिविजुअल कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल एटी होची वन इंडिविजुअल कंटेन्स वन सेक्स दैट इज मैन क्लियर मैन भितरे मेल फीमेल दीटा रही आइदर मेल रिंबा फीमेल रही कहते डायो डायो मीन्स दुई सियस मीन्स हाउस एटी दीटा घरे एटा हूँ गोटे घरे दी जन थिले एटी हूँ दीटा घरे तामाने मेल गोटे घरे फीमेल गोटे घरे तामाने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गोटे इंडिविजुअल भितरे एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गोटे इंडिविजुअल भितरे तामाने एटा हूँ सेक्सेस आर सेपरेट यूनिसेक्सुअल तामाने एटी वन इंडिविजुअल बियर्स ओनली वन type of reproductive organs either it may be the male or it may be the female either it may be the male or it may be the female एटा man cat dog etc clear एटा होची dioecious बा unisexual monoecious hermaphrodite बा एटा को कहते bisexual but here it is a dioecious or unisexual then you come to the another thing it is called as the oviparous
ओभिपेरस ओभिपेरस एनिमल्स एटी दुईटा वर्ड आ गोटे हूँ विविपेरस विविपेरस ओभिपेरस एनिमल एनादर इज द विविपेरस एनिमल ओभिपेरस मीन्स एटी ओ अच्छी ए अंडा है जो माने अंडा दियंती से माने हले ओभिपेरस एग लाइंग एनिमल्स जो माने अंडा दियंती दोज एनिमल्स प्रोड्यूस एग or those animals that is laying eggs, they are egg laying animals, that is oviparous. Your birds, all birds, snake, maximum snakes, and your fishes and your frog hela macho bengo hela au tomro maximum animals are oviparous. Clear? जो माने अंडा दियंती, these animals are oviparous animals. Clear? Viviparous, they are producing the child, that is only the mammals, केवल स्तन्यप्रायी, having the placenta, ताकर गोटे placenta हुए, placental mammal, ता माने ताकर कौन हुए मन रखिथिबो जतरा गाईटे हेची कि कोनटे हेची छेलीटे हेची जदि पिला देइची कहंती फूल पड़ी नाही फूलटा को कहंती प्लासेंटा सेकेंड ईयर जमे पढ़िले मुई ही पढ़ेमी कौन ना व्हाट इज प्लासेंटा हला सेटा को कहंती फूल दैट इज द प्लासेंटाल मामाल किछि मामाल अछंती जो माने अंडा देंती मोनोट्रिम्स हला सेठी से माने कोन करंती अंडा देंती से दैट इज द दे आर द लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मामाल्स इवोल्यूशन कहूँ जे रेप्टाइल कतुरु गोटा लाइन ले मामाल जाइए गोटा लाइन ले बाड़ जाइए तेणु मोनोट्रिम्स जो गुड़ाक रहिले सेमाने होचंती दैट इज द एग लाइंग मामाल्स सेमिति एपटे आर्कियोप्टेरिक्स गोटे अच्छी जोटा कि रेप्टाइल भलिया किंतु बाड़ भलिया अधे रेप्टाइल भलिया अधे सेटा जना पड़ुची जे रेप्टाइल बा सरीसृप कतुरु बाड़ माने ही डेभलप करचंती आउ एठी ए बाड़ दैट इज द सरीसृप जातिरु मनीष माने जाइचंती एटा अलगा अलगा लाइन ले जाइछि हला तेणु एटा हला ओभिपेरस तापर विविपेरस हला child producing animals they are only mammals that is those mammals maximum mammals that is the placental mammal bagho cheli menda gai monisho they are producing the child clear they are the viviparous clear then another one it is come to that is viviparous another one that is the you try to understand me that is number 5 that is ovoviviparous 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 means ovo that is ovoviviparous 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 means ovo means egg laying oviparous vivi means child producing they are called as the ovoviviparous एटी किए ए चंदन मंदर बुढ़ा भाइपर तो साप होची भाइपर एंड स्कलियोडन ए गोटे माछ अछि स्कलियोडन एटा जो शार्क माछ हला दैट इज ओविविपारस दैट इज स्कलियोडन एंड दैट इज योर that is the viper that is the shark or the that is the scoliodon or you can say that is the shark clear eka so एटी कौन है ना विविपेरस ए भाइपर किए ये जो चंदन मंदन बुढ़ा साप देखि बड़ा साप है गाँव में मैक्सिमम 3टा पॉइजनस स्नेक गोटे हूँ कोबरा जार फणा अच्छी एमती जार फणा थी से है कोबरा एमती फणा थी जार से है कोबरा है एमती फणा थी एटा है कोबरा आउ जो गुड़ाक चित्ती दैट इज क्राइट ता देहरे एमती गार 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 सब थी धला कला गार थी रणा चित्ती यही सब जातिर आउ गोटे अच्छी दैट इज भाइपर तार मुंडटा एमती 4 कुणिया 3 कुणिया थी एमती आ बॉडीटा बहुत मोटा आमती 3टा पैच भाया लाइन एमती 3टा लाइन एमती डायमंड शेप्ड पैच एमती पड़ी ऊपर बॉडी उपरे सेटा हूँ भाइपर है तो ये भाइपर कौन करे से छुआ दिए किंतु से छुआटा सेटा को कहा जाए दैट इज ओवोविविपारस शार्क माछ देखिच ये जो दैट इज शार्क जोड़ाक ये टीवी रे जियोग्राफिकल चैनल देखि दैट इज दे आर ओवोविविपारस दे आर प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड
प्रकृत में कौन हुए ना आमर कौन हुए व्हाट इज विविपरस एंड व्हाट इज ओविविपरस दैट इज आम केस दैट इज विविपरस एंड ओविविपरस भितर तफात अच्छी कौन तफात अच्छी आमर कौन हुए ना आमर माँ सहित ए प्लासेंटाटा मार यूट्रस सहित अटैच होगी छुआर नाही सहित अटैच होता है दिस इज द प्लासेंटा आ एटा हूँ एम्ब्रियो एटा हूँ छुआ है तेणु ये मार यूट्रस सहित एटा हूँ मार यूट्रस है एटा यूट्रस सहित मार एटा अटैच होता है एटी जो अटैच होता है से एग रे खाद्य न थाए से तार मार रक्तरू सब ऑक्सीजन माँ जहाँ खाए ताकतरू पाए किंतु एठी कौन हुए एठी अंडा भितर सफिशिएंट खाद्य रुहे ओविविपरस किंतु से अंडाटा एनिमाल बाहर को आसे नहीं तार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भितर से अंडाटा रही जाए आ से अंडाटा ता बॉडी भितर बढ़ी कि तारी कतरू छुआ बाहर से ता माँ कतरू किसी खाद्य पाए नहीं प्रकृत में से अंडा दबा कथा किंतु से अंडाटा बाहर को आसे नहीं कुकुड़ा अंडा बा आमर बेंग अंडा बाहर को आसे ता देहरु आस्ते आस्ते किछि दिन पर ता भितर पिलाटे बाहर बा छोट दैट इज द गुडे चाइल्ड दैट इज द गुडे यंग वन बाहर किंतु एठी कौन हम ना एठी अंडाटा तार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भितर रही जीवो सी तार माँ कतरू किछि खाद्य आदु ग्रहण करिवो नाही किंतु से अंडा भितरे तार डेभलप हम आउ से अंडाटा ता बॉडी भितरे फाटिबो बाहरला बेलू छुआटा बाहर है तेणु से जो छुआटा बाहरला से छुआटा बाहरला किंतु से छुआटा प्रकृत में ता माँ कतरू किसी खाई नहीं जहाँ अंडा भितरे ता माँ रखी से खाद्य से बढ़ी सो दैट इज कॉल्ड एज दी ओविविपरस ओविविपरस तेणु ओविविपरस योर भाइपर जो चंदन मंदन बड़ा तार सब छोट छोट साप बाहर है आउ कौन ना ये जो सार्क माछ मगर माछ दैट सार्क माछ ता देहर भी छुआ बाहर है तो दे आर कॉल्ड एज दी ओविविपरस क्लियर देन यू कम टू अनदर थिंग आर यू अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट आर यू क्लियर और नॉट दैट इज दी विविपरस oviparous on egg laying, viviparous child producing, ovoviviparous egg laying but child producing, egg laying but that egg does not come to outside, they remain inside the reproductive tract of the female and from that that is the young one comes out. Clear? Then after तापरे कौन पढ़ा ना आम देखा किए ना आउ देखा केते बड़ा हुआ मोनोगेमस दैट इज 6 मोनोगेमस आर अपोजिट होची पॉलीगेमस मोनोगेमस पॉलीगेमस सब बेले ट्राई टू दैट इज ये जो मु तुमको मूलर कही जो वार्ड गुड़िक अच्छी से वार्ड गुड़िक डिवाइड कर बा भांगा शिख से भांगा शिखले आम जापर आउ बड़ वार्ड पढ़ले भी आम निजे भांगी पार मोनो मीन्स सिंगल पोली मीन्स मेनी है मोनोगेमस ये इंडिविजुअल कौन हुए ना वन इंडिविजुअल रिमेन्स विथ द पार्टनर ऑफ the opposite sex तामाने गुटे मेल गुटे फीमेल एटा मोनोगेमस कौन ना हियर these animals have one sexual partner ताने गुटे मेल गुटिए फीमेल सहित रुहे तार पारा है दैट इज पारा एटा मोनोगेमस बुझी वन दैट इज द मेल रिमेन्स विथ वन फीमेल that is the animals have only one sexual partner clear para hela eguda ka dekhibo para eguda eta hochi monogamous polygamous poly means many gamous eti one individual having many sexual partners गुटे मेल गुड़ाए फीमेल उपभोग करिवो गुड़ाए फीमेल ना गुटे मेल गुटे फीमेल गुड़ाए मेल को भी उपभोग करि परिवो हला one male have many that is the partners sexual partners that is the animals live with a company of more than one sexual partner गुटे ग्रुप रे रहिबो सेठी गुटे मेल गुड़ाए फीमेल सहित रहिबो किंबा गुटे मेल गुड़ाए फीमेल को उपभोग करिवो किंबा गुटे फीमेल
मोर मेल को उपभोग करिवो हला। तो एटा पॉलीगैमस किए पॉलीगैमस होची दैट इज द पॉली एटा होची पॉलीगैमस। पॉलीगैमस पुणी दी प्रकार है जिवो ताने गुटे मेल हबो गुडाई फीमेल हेबे गुटे मेल गुडाई फीमेल दैट इज पॉलीगाइनस। पॉलीगाइनस पॉली मीन्स मेनी गाइनस मीन्स मु कही गाइनसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेमती पॉलीएंड्रस तामाने मेनी मेल एटा होची मेनी फीमेल वन मेल मेनी फीमेल वन मेल मेनी फीमेल एंड वन फीमेल मेनी मेल क्लियर। एटी गुटे दैट इज मेल कंज्यूम करुची बा उपभोग करुची एंजॉयस मेनी फीमेल पॉलीगाइनस मेनी फीमेल पॉलीएंड्रस मेनी मेल ताने मेनी फीमेल जतले वन मेल आ मेनी मेल जतले वन फीमेल हला। एटा केटी एटा फिश मान करे जतले फिश पढ़िबो तमे हायर क्लास रे देखिबो जतले हमर सब करा जाय चाष सेतले गुटे कोन करा जाय ना गुटे माने माछ सहित गुटे फीमेल सहित दीटा मेल को कॉम्बिनेशन ले छड़ा जाय हला। कारण सेक्सुअल एंजाइटी डेवलप करिया पई गुटे फीमेल रो दीटा मेल दरकार हला। सेमिति पॉलीगैमस एटा किए मांकड़ देखिथिबो गुटे अंडिया मांकड़ को गुड़ाए फीमेल से रखिछि हला। लायन बुझिउछि एगुडा कहला दैट इज पोली दैट इज गाइनस दैट इज मंकी टाइगर लायन एक्सेट्रा हला। मंकी भितरे अंडिया माकड़ हेले मारपीट हुए ओनली फॉर दी फीमेल हला ओनली फॉर दी फीमेल से कहबो अंडिया माकड़ कौन करे ना माँ कौन करिवो ता माँ कौन जतले पिला हबो माई पिला हेतिवो से माँ ताको लुचेकी रखिवो कारण अंडिया जदि देखिवो से ता माई पिला को मारी देबो से कारण से कहे जे मुई केवल ये फीमेल मानकर रजा बा मु यांकु ये उपभोग करिमे आउ के एठी फीमेल मेल हेई परिबे नाही। तेणु जतले दीटा दल मिसी जाती सेतले मेल मेल मानक भितर बेसिका युद्ध हुए हला। तो सेटा होची कोन पॉलीगैमस पॉलीगाइनस एंड पॉलीएंड्रस मेनी एटा मने करो पॉली माने मेनी गाइनस मीन्स फीमेल मेनी फीमेल ताने वन मेल हला। एटा माकड़ तमर लायन टाइगर हला इवन बिलेई भी हला एटा आउ पॉलीएंड्रस दैट इज वन मेल that is polyandrous one female many male it is fish हला। आउ ये जो आमे जो करूचे कोन ए जो चिकन फार्म करचे जो उडा को कुकुड़ा फार्म करचे सेठी कोन करा होची गुटे गंजा को 10टा फीमेल को रखा होची गुटे फीमेल सहित गुटे फीमेल माने गुटे मेल 10टा फीमेल रखा होची हला। तो सेटा होची कोन ना पोली दैट इज गाइनस हला आला पॉलीएंड्रस। तापर आमे देखिबा कोन ना पॉलीएंड्रस पॉलीगाइनस मोनोगैमस तापर आउ कोन देखिबा आउ गोटे होची एनांड्रोमस फिशेस आउ गोटे देखिबा एडा कटिके टिपिकल टर्म यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एनांड्रोमस बहुत गरम होची हला। number that is anandromous fishes what is anandromous fishes? Anandromous fishes are the marine fishes. These are the marine fishes migrate from the sea into the estuaries for the spawning. एगुड़ा कौन मेराइन फिश एमाने कौन करुँच ना मधुर जल को आसती किंबा नदीर मुहाण को आसती जोटी माने टिके लुण कम से जगार एमाने ब्रीडिंग दियंती बा अंडा दियंती एला होचंती एनांड्रोमस। आमे देखिथिबा इलिसी गंगा इलिसी बा कहंती सुवर्णरेखा इलिसी जो इलिसी गुड़ाक समुद्र रे थांती समुद्र इलिसीटा कौट रुए समुद्र रुए तेणु समुद्र रे रहे इलिसी अन्य सीजन ले खाइले भल लगे नहीं किंतु केतबले भल लगे ना जति वर्षा दिने कौन हुए जिते नदी पानीटा समुद्र रे मिसे सेलिनिटी बा तार
लुण अंशटा टे कमी जाए कमिगले से माछटा टे मीठा लगे है वर्षा दिने तेणु जो माछ गुड़ाक ब्रीडिंग सीजन रेनी सीजन इज द ब्रीडिंग सीजन फॉर द फिशेस क्लियर तेणु जो माछ गुड़ाक ब्रीडिंग सीजन ले समुद्र रु पलि आसबे गंगा को किंबा दैट इज आमर सुवर्णरेखा को पलि आसती आया नदी कूल को पलि आसती से इलिश गुड़ाक बहुत रेट आउ से बहुत मीठा लगे कारण से मधुर जल भितर बास करती बेसी समय कटाती तेणु बहुत मीठा लगे तार रेट भी बहुत से पाइबा भी भारी कष्ट आमको खावाई है तेणु दे आर कॉल्ड एज द एनाड्रोमस फिशेस दैट मीन्स दिस मेराइन फिशेस माइग्रेट माने पलि आसती पुणी स्पनिंग कर सारा अंडा दे सारा पुणी फेरी जाती है माइग्रेट फ्रॉम द सी इनटू द इस्टोरीज है इस्टोरीज और द रिवर्स और द फ्रेश वाटर फॉर देयर स्पनिंग माने अंडा दवा है तापर आउट होची कैटाड्रोमस आउट होची कैटाड्रोमस फिशेस एटी कौन हम ना नदी माछ these fishes migrate from the estuaries to the sea for spawning ता माने नदी रू एमाने समुद्र भितर को पळै जिवे अंडा दवा पई हला एटा एंगुइला बोली गोटे माछ अछि दैट इज एंगुइला हला दैट इज एंगुइला बोली गोटे माछ अछि ए माछटा कोन हुए ना नदी रू पळै जाय समुद्र भितर दैट इज कॉल्ड एज द कैटाड्रोमस ये दुटा वर्ड एते यूज हुए ना तथापि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी तापर आमे पढ़िबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन आउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन एसेक्सुअल ए दुटा अल्टरनेट वर्ड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटा डिटेल तुम पढ़ो केतबले ना जो तुम सेकेंड ईयर को आसो फर्स्ट ईयर पर सेकेंड ईयर को आसो सेकेंड ईयर फर्स्ट चैप्टर एवं तुम फर्स्ट सेकेंड ईयर आरंभ हम दैट इज रिप्रोडक्शन सेक्सुअल दैट इज द रिप्रोडक्शन से अंडर में तुम पढ़ो एसेक्सुअल आउ सेक्सुअल मन रखि बायोलॉजी मैक्सिमम जी ए लगी वर्ड सहित दैट इज कॉल्ड एज द एब्सेंस या माने होची एब्सेंस और ता माने होची नो सेक्स माने आइदर इट इज मेल और दी फीमेल लिंग है दैट इज द जेंडर दैट इज आइदर इट इज मेल और फीमेल एटा होची एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तुमको तुमर नीलाद्री सार पढ़ाई थे दैट इज द लिविंग वर्ल्ड रे दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन इट इज ए बिहेवियर और इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स बहुत गरम हो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स से पढ़ाई थे है तेणु से जो प्रॉपर्टी भितर रिप्रोडक्शन कौन द रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस मोर इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड माछटे माछ छुआ दब छेलीटे छेली छुआ दब मनीष मनीष छुआ दब दैट इज द रिप्रोडक्शन है इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन केमिति दउची कौन करছে से अलग कथा है दैट इज दैट फेनोमेना और दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए लिविंग बॉडी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए लिविंग बॉडी तो रिप्रोडक्शन दी प्रकार है गोटे हूँ एसेक्सुअल आउ गोटे हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेले मुझे पढ़ेली गोटे हूँ बाइसेक्सुअल आउ गोटे हूँ दैट इज गोटे हूँ मोनोसियस आउ गोटे हूँ डायोसियस मोनोसियस हूँ बाइसेक्सुअल एंड डायोसियस हूँ यूनिसेक्सुअल जनक भितर दीटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहिले से हला मोनोसियस जनक भितर गुटे रहिले से हला डायोसियस बा यूनिसेक्सुअल जदि यूनिसेक्सुअल हेथिबो ताहले हायर केस माने करे मैक्सिमम एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल बट प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल मैक्सिमम किंतु एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल तो माने गुटे 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 इंडिविजुअल गुटे सेक्स बियर करछि मेल किंबा फीमेल हला एडा हला दैट इज वन इंडिविजुअल बियर्स वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आइदर इट मे बी द मेल और इट मे बी द फीमेल क्लियर at the time of reproduction both are necessary male produces the sperm and female produces the ova male शुक्राणु दब फीमेल डिंबाणु दब से दीटार
संजोग हेले जुग्मज तैयारी हम जुग्मज कतु आस्ते आस्ते पिलाटीए बढ़ है। तो यहाँ सब एनिमल हायर एनिमल मान केस प्रযোज्य है। तेणु दुईटा इंडिविजुआल दरकार गोटे मेल गोटे फीमेल। जदि गोटे इंडिविजुआल प्रोड्यूस करिपारिबो रिप्रोडक्शन करिपारिबो तार मेल कि फीमेल आमे चिन्हवा दरकार नहीं। दैट इज एसेक्सुअल। That is asexual. When one individual can produce or can reproduce, that reproduction is called as unis. That is asexual. Without the recognition of its sex, से तार मेल हो कि फीमेल हो से तरे हमर जाय आसे नाही। आउ सेठी कोन आउ गुटे जिंस that is no use of ova and sperm. सेठी अंडा आउ शुक्राणु रो समष्टि हला नाही बा तार यूज हला नाही। That is asexual reproduction. मन कर गोटे टगर गछर गोटे डालटे काटी आनिकी आमे लगेदेवा सेठू आ गोटे टगर गछ हम है। आलूटे काटी आनिकी गोटे जगार लगेदेवा गोटे आलू सेटा आ गोटे हम तार मंजी दरकार नहीं है। गोटे डाल काटी आनिकी मंदार गछर कोउटी गोटे पुतिदेवा सेठू आ गोटे मंदार गछ तैयारी हम से डालरू। दैट इज asexual reproduction है। That is vegetative and that vegetative is also under the asexual. Clear? हाइड्राटा को आमे काटी दवा गोटे हाइड्राटा एमती अच्छी ताको आमे खंडे खंडे काटी दवा काटी देले से खंडे खंडे गोटे गोटे छोटिया छोटिया पीस गोटे गोटे रिप्रोडक्शन हवा। दैट इज द रीजेनरेशन पावर। इट इज ऑल्सो अंडर द asexual. बडिंग जो हुए ची बडिंग ऑल्सो asexual. ये गोटे छोटियाटे बाहर बाहर की छोटिया हाइड्राटा हो एमती कटिगले से नुआ हाइड्रा परिणत हम। दैट इज बडिंग asexual. Asexual माने that is it is a method of reproduction where only one individual is participated है without recognition of any sex. तारा sex recognition हवा दरकार नहीं. So it occurs by the somatic cell division. दी प्रकार सेल डिविजन हुए गोटे हूँ हाई स्कूल पढ़ीच गोटे हूँ सम विभाजन दैट इज सोमाटिक सेल डिविजन आ गोटे हूँ अर्ध विभाजन दैट इज मियोसिस है। गोटे हूँ माइटोसिस गोटे हूँ मियोसिस। ये कौन हुए ना ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले कौन हुए केवल माइटोसिस हुए। ये सम विभाजन हुए ये अर्ध विभाजन हुए नहीं। ये सम विभाजन माने 2n रु 2n तैयारी हम है। 2n रु 2n तैयारी हम क्रोमोजोम नंबर सामान हम गोटे सेल दीटा सेल हम किंतु से दीटा सेल रो क्रोमोजोम नंबर 2n हम है। तेणु से सम विभाजन। आउ जेटा अर्ध विभाजन सेटा कौन ना गोटे सेल रु प्रथम दीटा सेल हम से माने nn हेबे आ तापरे पुणी दीटा सेल हम एटा चारटा सेल हम एटा होची समस्त nn हेबे एटा अर्ध विभाजन है। तो यहीटा केवल हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भितर टेस्टिस आ ओभार रे है। यही केवल जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले ए मियोसिस टाइप ऑफ अर्ध विभाजन टाइप ऑफ सेल डिवीजन ता यूज हुए। आउ ए माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन सम विभाजन एसेक्सुअल हुए। तेणु एसेक्सुअल ले कौन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन वन इंडिविजुअल इज सफिशिएंट टू रिप्रोड्यूस विदाउट द रिकॉग्निशन ऑफ its sex, whether it may be the male or the female, and where only the somatic cell division occurs or mitotic type of cell division occurs without meiosis and no production of no use of the ova and sperm. एडाला एसेक्सुअल। सेक्सुअल को आसवा सेक्सुअल आम मान केस रे हायर केस रे बाघ माकड़ कुकुर मनीष फणीष साप फाप एगुड़ाक सेक्सुअल जोटी दीटा पार्टनर दरकार सेक्सुअल एटी सेक्स दरकार गोटे मेल दरकार गोटे फीमेल दरकार। सेटा बाइसेक्सुअल हेले भी बाइसेक्सुअल भी हम आउ बाइसेक्सुअल बहुत कम कौटी एनिमल केस रे किंतु यूनिसेक्सुअल इज मैक्सिमम। तेणु जहाँ भी हो तेणु सेक्सुअल केस रे एटी दीटा पार्टनर दरकार एटी यूनि पार्टनर एटी बाई दैट इज बाई पार्टनर और दैट इज टू इंडिविजुअल्स आर नेसेसरी है। आउ एटी कौन हम टू पेरेंट्स आर नेसेसरी वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। आउ एटी गेमेट्स आसे स्पर्म आ ओवम पार्टिसिपेट करती कौन कौथिरे ना दैट इज रिप्रोडक्शन ले। आउ कौन हुए ना अर्ध विभाजन हुए एटी सम विभाजन एटी भी हुए किंतु एटी अर्ध विभाजन हुए मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स। एडाक मैन फिश फ्रॉग हायर केस रे समस्त देहरे ए प्रकार डिवीजन हुए है। तापरे आमे पढ़िबा दैट इज सम अदर हैबिट ऑफ एनिमल्स
है जोड़ाक कोल्ड ब्लडेड आउ वार्म ब्लडेड युवाक सब अच्छी है कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड युवाक अच्छी किंतु टुडेज दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर आई एम फीलिंग वेरी हॉट क्लियर सो let me that is then you come to that is the breeding with this that is the breeding habit is finish that is this is called as the breeding habits bujhela ki nahi hala this is all about the breeding habits so to the next class I will start that is the warm blooded cold blooded etc clear so let me repeat the again the same thing that is the breeding habit monoecious or hermaphrodite that is one individual which bears both male and female reproductive organs then under that is either protoandrous or protogynous protoandrous means first that is androus male that is it is bisexual but where the male reproductive organs matured first then the female सेटा हला प्रोटोएंड्रस प्रोटोगाइनस जोटी फीमेल मैच्योर्ड हला तापर डायोसियस यूनिसेक्सुअल एटी सेक्सेस आर सेपरेट मेल आउ फीमेल अलग अलग भिवी ओभि दैट इज आपरे आछिबा डायोसियस एटा हला यूनिसेक्सुअल तापर आसले ओभिपेरस तापर आसले भिविपेरस ओभिपेरस माने एग लाइंग एनिमल भिविपेरस होची चाइल्ड प्रोड्यूसिंग ओभो भिविपेरस माने एग दउथबो किंतु एगटा बाहर को आसीबनी मार यूट्रस भितरे रहिबो सेटा परे छुआ दबो हला monogamous one individual having the only one sexual partner है मेल हेले तार गुटे फीमेल हम है आउ polygamous one individual having many sexual partners polyandrous one female many male and that is the polygynous one male having many female that is polygynous out ala polyandrous one that is female many that is the male then that is anadromous that is the marine fish moving to the that is the for to the rivers or the fresh water for their breeding and the catadromous that is the catadromous are the that is the marine animals moving or migrating to the that is the rivers for their spawning then the asexual reproduction and the sexual reproduction into next class I will start other that is the habitats clear so with this I finish.